Students, first of all, I welcome you all into my YouTube channel and Talukdar Maths. I hope everybody are doing your studies very well, and you are going through my videos and understand whatever the topic I have discussed. In the last class, I have discussed about the particular topic. It is called compound angle, multiple angle, and submultiple angles. Okay, and उसमें क्या we have discussed about the different type of formulas basically, and solve few questions related to this particular formulas. Okay, so with extension of this, today we are also going to discuss about few important results related to this particular multiple submultiple angles. Okay, and using this we are going to solve few questions, and I hope you will enjoy the class. Okay, let us start with the class. First, you have seen that I have written few results. It is called, I have written in remarks, it is special results. ये क्या है? Special result है. And you see what are the results in the left hand side. It is given that sin C plus sin D, C and D are some angle. Sin C plus sin D equal to, you can write 2 sin C plus D divided by 2, sum of the angle divided by 2 into cos difference of the angle divided by 2, sum of the angle divided by, ये जो angle है दोनों का sum कीजिए and divided by 2, and then cos, starting by sin and by cos, it is what? C minus D divided by 2, that means difference between the angle divided by 2. So how to remember this particular result? You can remember it by 2SC. Only you remember this particular part, 2SC. And what will happen with S? S means sin, C means what? Cos. With S, sum of the angle divided by 2, and with C, difference of the angle divided by 2. I will prove this particular result and this one. Okay, दो result मैं proof करूँगा such that you can understand why this result is, ये result क्यों है, किस लिए हुआ, इसलिए मैं proof करूँगा. And sin C minus sin D, this is both are sin here, both are sin C minus sin D, starting with cos, here starting with sin, and everything is same, sum of the angle divided by 2, difference of the angle divided by 2. So you can write it is what? 2CS. You can write 2CS. Just you remember that sin C minus sin D equal to 2CS. And what will happen with C? C plus D divided by 2, and with S, C minus D divided by 2. That's you have to remember. Okay. Then cos C plus cos D, it is very easy. Both are cos. Both are what? Cos. And first angle is C plus D divided by 2, second angle is C minus D divided by 2. It is very easy. 2CC. You can say 2CC. Okay. You can write 2CC. And last one is cos C minus cos D. In every term there is a positive, and here it is a negative sign will come, and remaining both are sign. If minus is there, both are sign. How to remember? Minus है तो दोनों साइन होगा, प्लस है तो दोनों कॉस होगा, और साइन में क्या होता है? इफ प्लस इज देयर स्टार्टिंग विथ साइन, इफ माइनस इज देयर स्टार्टिंग विथ व्हाट? कॉस. ये थोड़ा सा टेक्निक आप लोगों को डेवलप करना होगा. इफ़ यू डेवलप दैट टेक्निक, देन डेफिनेटली you will remember these results. Okay, you cannot memorize like that sin C plus sin D equal to 2 sin C plus D divided by 2 into cos C minus D divided by 2. ऐसा याद नहीं रख सकते. You cannot remember this. Okay, आप ऐसा remember नहीं कर सकते. तो आपको थोड़ा सा जैसे मैंने टेक्निक बताया वो टेक्निक को फॉलो करो. ठीक है, दोनों साइन के प्लस अगर बीच में प्लस हो, इफ एडिशन इज देयर इन बिटवीन दैम, तो व्हाट विल हैपन? स्टार्टिंग विथ साइन एंड बाय कॉस. साइन से शुरुआत होगा और कॉस से एंड होगा. सिमिलरली माइनस होगा तो कॉस से शुरुआत होगी और साइन से ख़त्म होगा. सिमिलरली कॉस सी प्लस कॉस डी, उसमें दोनों ही कॉस है, और कॉस सी माइनस कॉस डी दोनों ही साइन है. एंगल क्या है? पहला एंगल सी प्लस डी, सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2, एंड दूसरा क्या है? डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2. ये याद रखो. ठीक है, हो जाएगा. Now I am going to prove, suppose this one, first one. Okay, before this I just remember, I remind you a formula, that is in the last class I have discussed sin A plus B
plus sin A minus B equal to what? 2 sin A into cos B. This particular formula I have given you in the last class. Okay, I am using this particular formula. Another formula, you know, cos A plus B minus cos A minus B. What is the formula? The formula is 2 sin A cos B. This is the minus आएगा, ठीक है? 2 sin A sin B, I'm sorry, 2 sin A sin B. Cos A plus B minus cos A minus B equal to what? 2 sin A sin B. ठीक है? So these are the two formula I am using. To prove this, I have used this formula, and to prove this, I have used this formula. Okay. So just remember, that is, review this particular two formula. दो formula को पहले review कीजिए. Sin A plus B plus sin A minus B equal to what? 2 sin A cos B. Cos A plus B minus cos A minus B equal to what? Minus 2 sin A sin B. So first you review, पहले ये दो formula को review कीजिए, and then you start to solve these two results. I am going to first one and last one. बाकी दोनों आप कर सकते हो, और ये ज़रूरी नहीं है प्रूफ करना, लेकिन हाउ कैसे आता है थोड़ा कन्विंसिंग के लिए, थोड़ा सा कंसेप्शन क्लियर करने के लिए ये प्रूफ करेंगे. ठीक है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व फर्स्ट रिजल्ट. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट रिजल्ट? ओके, फर्स्ट रिजल्ट इज दिस वन. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. sin C plus sin D. Now C can be written as, C कैसे लिख सकते हो? C is equal to C plus D divided by 2 plus C minus D divided by 2, and D can be written as C plus D divided by 2 minus C minus D divided by 2. If you take LCM, ये दोनों LCM लिया करें. If you take LCM, what will happen? C plus D plus C minus D, D कैंसिल होगा. न्यूमरेटर क्या होगा? ट्वाइस सी होगा. न्यूमरेटर क्या होगा? ट्वाइस सी बाई 2, एंड फाइनली यू आर गेटिंग व्हाट? सी. तो सी कैन बी रिटन एज लाइक दैट. यू ऑल्सो टेक एलसीएम हियर, यू विल सी दैट दिस रिजल्ट इज इक्वल टू एग्जैक्टली डी. ठीक है? तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस. वाई आई हैव रिप्रेजेंट दिस? बिकॉज आई नीड दिस एंगल्स. मुझे ये एंगल चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें एक्सप्रेस किया है. ओके, सी को इस प्रकार एक्सप्रेस किया है. ठीक है? सो which इक्वल टू साइन, यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू व्हाट? C plus D given a third bracket, C plus D divided by 2 plus C minus D divided by 2. This is your C. And what is D? Sin C plus D divided by 2 minus C minus D divided by 2. Okay, so this C is replaced by this result, and D is replaced by this result. I hope you are understanding. Okay, now if I suppose that this angle is equal to what? A. If it is A, suppose A equal to what? C plus D divided by 2, and B equal to what? C minus D divided. We suppose that. So C and D are angle. C plus D divided by 2 is an angle, and which is equal to what? A. So you can write sin A plus B plus sin A minus B. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा. यस, A plus B होगा, ये क्या होगा? A minus B होगा. Are you sure? And which is nothing but your result this. Okay, you see sin A plus B plus sin A minus B equal to what? 2 sin A cos B. So from here you can write 2 sin A into what? Cos B, and which equal to 2 sin A क्या है? C plus D divided by 2, and what is B? B equal to what? C minus D divided by 2. I hope you understand. So finally what we get?
left hand side is sin c plus sin d, and right hand side is 2 sin c plus d into cos c minus d divided by 2. 2 sin c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2, and which is equal to exactly this result. Okay, so in this way you can prove it by using this particular result. Okay, so in the last class I told you that these are the formulas very important. These are the formulas very important. Now in questions, whenever problem will come, this type of expression, whenever we get this type of expression, हमें इस type का अगर expression मिले तो हम ऐसा formula use करेंगे. ठीक है, we will write what? Sin c plus sin d, starting with sin and by cos. First angle is what? Sum of the angle divided by 2. What is the second angle? Difference of the angle divided by 2. So last one, number 4 proof करें. Let us prove the number 4 one. So number 4 क्या था? Cos c minus cos d इक्वल टू 2 साइन, माइनस था आंसर में, 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c minus d divided by 2. Okay, so take left hand side like in previous result में जैसे मैंने किया था, I have taken c equal to what? Cos c minus cos d. Okay, so c can be written as what? C plus d divided by 2 plus c minus d divided by 2. So c is this one. Okay, and cos c plus d divided by 2 minus c minus d divided by 2. Okay, understood? I am using maximum English language, and I believe that if you interacting with English language, you can develop your English also. And I am not very good in Hindi. My pronunciation in Hindi is not so good. That's why I am using English language more. Okay, if still you are getting that is not connected with me, and if you are getting problem in English language, you can send me in the comment box your problem. Definitely I will try to that is use Hindi in coming days. Okay, so मैं कोशिश करूँगा हिंदी यूज़ करने के लिए. इतना अच्छा नहीं है हिंदी मेरे को, so इसीलिए इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम यूजिंग इंग्लिश मोर. Okay, and if you try then you can develop English. English is a very global language, so must you develop it, and your communication in English will help you give more exposure in future, in coming days. Okay, so ultimately what we get? Cos c, this is your, suppose a, like this is a. Okay, in similar cases a equal to this, b equal to this, so you can replace what? Cos a plus b, and then you can replace is cos a minus b. Okay, and which we know that this is equal to what? Minus 2 sin a into sin b. This is the result. Okay, this result I have used. Okay, मैंने ये result use किया है. And then you see minus 2 into sin, what is a equal to what? C plus d divided by 2, and b is what? C minus d divided by 2. So in this way you can prove all the results. I have proved two results, and other two results you try and see that whether left hand side is equal to right hand side or not. Okay, so these 3-4 results are very important, and it will be used in your coming chapter or whatever trigonometry is related. These results are always using. Okay, it can be used in calculus also. In coming days you study calculus, differential calculus, integral, basically differential calculus. So this type of thing will be used. Okay, in integral also. In the last class I have discussed about multiple angle like twice a, sin twice a, cos twice a, tan twice a. Okay, and today we are discussing about sin 3a, cos 3a, tan 3a. What are these results of sin 3a, cos 3a and tan 3a? क्या है ये result?
हम ये आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। sin 3a equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. This is sin 3a, and cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a, and tan 3a equal to 3 tan a minus 10 cube a divided by 1 minus 3 tan square a. These are the three results. So I am going to prove it, okay. Among this I will prove one, and then I will prove this one, okay. Now you know that sin 3a can be written as sin twice a plus a. You can write sin twice a plus a, because 3a can be written as what? Twice a plus a. And if you consider this is your a and this is your b, then it will be converted into formula sin a plus b. Sin a plus b equal to what? Sin a into cos b plus cos a into sin b. Sorry, b means what? A, okay. तो ये जो फार्मूला था sin a प्लस बी, उसको यूज़ किया है. sin a प्लस बी क्या था? sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी. इसमें a क्या है? ट्वाइस a है. और व्हाट इज b? b इक्वल टू व्हाट? a. ओके, यू चेक योर फार्मूला, देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके. नाउ sin ट्वाइस a, यू गॉट ए फार्मूला sin ट्वाइस a, इट इज इक्वल टू व्हाट? ये sin ट्वाइस a फार्मूला क्या था? 2 इंटू साइन a इंटू कॉस ए, इसके साथ तो कॉस ए है, एंड व्हाट इज कॉस 2a, ओके. कॉस 2a सी योर रिजल्ट. इस साइन 3a में क्या है? रिजल्ट ऑफ साइन में आना चाहिए, है कि नहीं? एंड यू नो ए रिजल्ट ऑफ cos 2a. cos 2a इज इक्वल टू व्हाट? बेसिकली रिजल्ट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, and if you convert into sin only, then cos square a equal to 1 minus sin square a, and minus sin square a, and finally you can write 1 minus 2 sin square a. हमें रिजल्ट क्या है? साइन में चाहिए, इसीलिए cos twice a is expressed in terms of what? sin a. So cos twice a equal to 1 minus 2 sin square a. So we can write 1 minus 2 sin square a into what? sin a. I hope you are understanding. Now this 2 sin a and this one is what? Cos square a plus multiply करो sin a minus 2 sin cube a. Okay, if you multiply, if you expand, if you remove the bracket, what will happen? It will be sin a minus 2 sin cube a. Okay, your result is into only sin, okay. So that's why this cos square, cos को क्या करना है? sin में convert करो. How you can convert into sin? cos square a equal to what? 1 minus sin square a plus sin a minus 2 sin cube a. Okay, now this expression is what? If we expand it, 2 sin a minus 2 sin cube a multiply करने से होगा plus sin a minus 2 sin cube a. I hope you are understanding. Now this 2 sin a and this sin a becomes what? 3 sin a, and this 2 sin cube a, 2 sin cube a means what? 4 sin cube a, and hence sin 3a equal to what? 3 sin a minus 4 sin cube a. We get the final result, okay. So sin 3a is what? 3 sin a minus 4 sin cube a.
there is a something similarity in sin 3a and cos 3a. You see here this interchanging ऐसा हो रहा है, ठीक है. पैटर्न क्या है देखो, फर्स्ट 3 then 4, here first 4 then 3. This type of 4 sin cube here first term is 4 cos cube type. This is 3 into sin a, here 3 into cos a. So pattern are little alternate pattern, okay. तो if you remember this, अगर आपको ये रिमेंबर हो और आपको ये पता ना हो तो आप पैटर्न से ये रिमेंबर कर सकते हो. इफ़ यू रिमेंबर दिस, यू कैन रिमेंबर दिस बाय द पैटर्न ऑफ दिस. सिर्फ यू हैव टू थिंक ओवर दैट ये क्या होगा, इंटरचेंज होगा. क्या होगा, इंटरचेंज होगा. दोनों के बीच क्या होगा, इंटरचेंज होगा, क्रॉस हो रहा है, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ क्यूब टर्म इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट, दिस टाइप ऑफ linear term there is no cube, so ये इधर आ रहा है. Same type of multiplication, okay. So let us try to find out what is tan 3a. Actually tan 3a is this one not, I have written is, so tan 3 tan a minus tan cube divided by 1 minus 3 tan square. Very very useful formula. Let us try to prove it. So tan 3a, similarly tan 3a can be written as what, tan twice a plus a. And you know what is tan a plus b? Tan a plus b equal to what? Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Tan a plus tan b divided by okay, what is a? In the place of a, in place of a what, twice a, and in place of that is b is what, a. Formula का जो है a plus b, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. Here a means twice a and b means a. Now again use the formula tan twice a. Tan twice a equal to what? 2 tan a divided by 1 minus tan square a plus tan a divided by 1 minus tan twice a equal to what? 2 tan a divided by 1 minus tan square a plus what into tan a. I hope I am replacing what, the value of tan twice a. Tan twice a का formula use किया है, समझ में आ रहा है. Now there is a, if you take LCM in the numerator में अगर LCM लिया जाए, what is the LCM? 1 minus tan square a. And in denominator if you take LCM, what is the LCM? 1 minus tan square a. तो दोनों 1 minus tan square a and 1 minus tan square a क्या होगा, कैंसिल होगा. आई एम डूइंग डायरेक्टली, ओके. कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, ठीक है. इफ़ आई टेक एलसीएम देन व्हाट विल हैपन, ये 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होगा, tan a के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो इसमें क्या रह जाएगी, 2 tan a प्लस tan a इंटू this one multiplied after taking LCM. I hope you are understanding because you know how to take LCM. Similarly here if take LCM, जो LCM नीचे लिया था न्यूमरेटर का LCM क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है, एंड डिनोमिनेटर का LCM क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है. So finally after taking LCM it becomes 1 into this means 1 minus tan square a minus, इसमें माइनस है, 2 tan a into tan a means 2 tan square a. Okay, this is the result we reach. Now some arrangement is required which equal to tan 3a equal to, here you see if you multiplied here 2 tan a
प्लस 10a. आफ्टर ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या होगा, 10a होगा. 2 10a प्लस 10a इज व्हाट, 3 10a. Okay, and this 10a into 10 square a means what, 10 cube a, and denominator is what, 1 minus 3 10 square a. Okay, so I hope you understand how this step to this step. तो थोड़ा सा ब्रैकेट आप लोग अगर ब्रैकेट रिमूव करें एंड इसके बाद अरेंजमेंट करें, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. सो फाइनली दिस इज आवर रिजल्ट. 10 3a इक्वल टू व्हाट, हाउ टू रिमेंबर, 3 इंटू 10a माइनस 10 क्यूब a डिवाइड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a. यू हैव टू रिमेंबर इट, देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू. सो आप इसको रिमेंबर करें. सो दीज आर द few रिजल्ट. यू कैन consider these are the standard result, these are the formulas. Using this we will solve the question. Okay, so these are the standard result. Okay, also there is a particular formula cot a plus b we have not discussed in the last class. So cot a plus b equal to, you can write 1 by 1 10a plus b. Okay, understood, 10a plus b, and 10a plus b is what, 10a plus b equal to what, 10a plus 10b divided by 1 minus 10a into 10b. Okay, okay, then you reverse it, it will be what, 1 minus 10a 10b divided by 10a plus 10. So these are the cot a plus b equal to what, this one. If you want to express cot a plus b in terms of cot, अगर cot में express करना चाहते हो तो what we will do, write 10a equal to 1 by cot a, 10b equal to what, 1 by cot b. Here 1 by cot b, I'm sorry, it is a, it is what, 1 by cot a, it is what, 1 by cot a. Then you take LCM, here also you take LCM, and finally after cancelling you will get the final result. Okay, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप बाकी पार्ट कर लीजिए. बाकी पार्ट क्या करें, 10a इक्वल टू 1 बाई कोट ए यूज़ करके एलसीएम लेने के बाद बाकी रिजल्ट आ जाएगी. ठीक है, यू विल गेट ए फाइनल रिजल्ट ऑफ कोट ए प्लस बी विच इज़ ऑल्सो यूजफुल वन. आई थिंक क्या होगा इसका रिजल्ट होगा, आई एम टेलिंग यू इट इज़ कॉट बी into cot A, or you can say cot A into cot B minus 1 divided by cot A plus cot B. Okay, this will be your final result. Okay, so cot A plus B equal to what, cot A cot B minus 1 divided by cot A plus cot B. If after converting 10A in terms of cot A, 10A equal to what, 1 by cot A, 10B equal to what, 1 by cot B, and do calculation, you will get the particular result. Okay, this is important. Okay, now using this particular results, I am going to solve few questions today in this class. Starting with a very simple question such that you can understand easily. Prove that cos square 2x minus cos square 6x equal to sin 4x into sin 8x. Okay, these are going to prove it. Okay, take left hand side, because if you take right hand side it will be difficult. From left hand side it will be easy to reach what that is right hand side. Okay, so take left hand side, cos square 2x minus cos square what, 6x. Okay, so here you can use a square minus b square formula. तो a square minus b square formula square क्या होगा, cos 2x
plus cos 6x into cos 2x minus cos 6x. Hope you are understanding. Clear? A square minus b square is equal to a plus b into a minus b result. Now this is, if you consider this is your c and this is your d, then it will be cos c plus cos d type, and it will be cos c minus cos d type. The 4 result I have given to you. Here 2 result, cos का result. प्लस होने से क्या होता है, दोनों cos होती है. माइनस होने से क्या होता है, दोनों साइन आती है, और बीच में पहले क्या होगा, एक माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा. अंडरस्टूड? सो cos c प्लस cos d इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू cos c प्लस d. आप इतना लंबा मत कीजिए, डायरेक्ट करें c प्लस d डिवाइडेड बाई 2. c मीन्स व्हाट, ट्वाइस एक्स. d मीन्स व्हाट, 6x मीन्स 8x by 2. कितना होगा, 4x. Or one step you can write for your understanding, otherwise you will may confuse. So 8x by 2 and cos c minus d. Okay, c minus d means what, twice x minus 6x is what, twice x minus 6x क्या होगा, minus 4x. Okay, so minus 4x by 2. Understood? This is one result. Okay, this is your first result. Now cos c minus cos d, formula का एक माइनस होगा. First, what is the formula? Cos c minus cos d equal to what, minus 2ss minus 2ss. First angle is sum of the angle divided by 2, and second angle is difference of the angle divided by 2. So minus 2 sin c plus d means what, 8x, and c minus d means what, minus 4x by 2. So बार बार करने का ज़रूरत नहीं, because whatever you have done here you are doing same thing here, c plus d, c minus d. सिर्फ क्या होगा, for this minus all are sign, for between them there is a plus all are cos, and माइनस होने से क्या होता है, एक नेगेटिव साइन आती है. ये रिमेंबर करना ज़रूरी है. Understood? I think the question is maybe wrong. Okay, whatever be. Now 2 cos 4x and cos minus theta equal to what, you know, cos minus theta equal to what, cos theta. All the formula will going to prove cos minus theta equal to what, cos theta. You got in the first 2-3 classes I have discussed about this particular result. Cos minus theta equal to cos theta, sin minus theta equal to what, minus sin theta. So इसमें माइनस ख़त्म हो जाएगी. 4x by 2 इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस एक्स इंटू, ये माइनस होगा, यस, 2 साइन 4x and sin minus theta equal to what, sin minus theta equal to, already I tell you, sin minus theta equal to what, minus sin theta. तो ये माइनस बाहर आएगी, दिस माइनस इंटू दिस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, एंड विच इक्वल टू sin 2x. Okay. Now we are arranging for all the angle containing 4x type. 4x वाला एंगल एक साथ करें, ट्वाइस एक्स वाला एंगल एक साथ करें. ठीक है. सो 2 इंटू साइन 4x इंटू cos 4x, one pattern of the angle, into to another 2 is there, 2 into sin 2x into what, cos 2x. ओके, ऐसा लिख सकता हूँ मैं. सो आई एम अरेंजिंग sin 4x एंगल टुगेदर, ट्वाइस एक्स एंगल, trigonometric ratio of the angle of same type together. Okay, now if you consider this is your a, this is your also a, we know 2 sin a cos a very special formula, you know, sin twice a equal to what, 2 sin a into cos a. Okay, you know, sin twice a equal to what, 2 sin a cos a. So here it is of the type 2 sin a into cos a.
इक्वल टू क्या होगा, साइन ट्वाइस ए होगा. सो इट कैन बी रिटन एज साइन 2 into a. 2 into a means what? 4x. 2 into 4x means what? 8x. Understood? Again same formula you can hear. A means what? 2x. Okay, 2 sin a cos a equal to what? Sin 2a. So it can be written as 2 into a. A means twice x. 2 into twice x means what? 4x. And hence finally we get our right hand side, which equal to what? Right hand side, and hence proved. Okay. So this is the way you can apply this particular result to reach our desired target. जो हमारा टारगेट है उस टारगेट में पहुंच सकेंगे. You see, there are this formula and this formula, cos c plus cos d, cos c minus cos d use. Again cos minus theta use. Again sin minus theta use. Again what? Sin twice a is used. Okay. So lots many formula has used in this particular question. So if you do not know one formula, then you cannot solve this particular question. Okay. तो इसीलिए फार्मूला याद रखना ज़रूरी है. यू हैव टू फाइंड आउट योर वेज एंड मीन्स, योर टेक्निक, हाउ टू रिमेंबर द फार्मूला. आई हैव गिवन सम टेक्निक. यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन टेक्निक टू रिमेंबर ऑल दिस फार्मूला सच दैट यू कैन सॉल्व. इन ट्रिग्नोमेट्री व्हाट हैपन, यू डू नॉट नो फार्मूला, यू कैन नॉट प्रोसीड वन स्टेप. सो इसीलिए फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है. आप याद रखेंगे तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. Okay, let us going to start another question of today's class. आज की क्लास में और एक क्वेश्चन सॉल्व करें. Question is, prove that sin 5x plus sin 3x divided by sin 5x plus cos 5x plus cos 3x equal to tan 4x. This is the question you are going to prove it. Okay, so let us take left hand side, sin 5x plus sin 3x by cos 5x plus cos 3x. Okay, so here two formula we are going to use. One formula is sin c plus sin d, another is cos c plus cos d. What is sin c plus sin d? प्लस रहेगा तो क्या होता है फॉर्मूला? 2sc. साइन से शुरू होता है, cos से एंड होता है. एंड cos c plus cos d मीन बोथ आर cos. इन 2cc. फर्स्ट एंगल इज एडिशन, दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाई 2. एंड सेकेंड एंगल इज व्हाट? डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2. सो यू कैन यूज 2 sin c plus d, 5x plus 3x is equal to what? 8x divided by 2 into cos 5x minus 3x means what? Twice x divided by 2. I hope you are understanding. 2 sin c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2. Similarly here 2 cos 8x by 2 into cos twice x by 2. Okay, and here it can be the 2 to cancel. 8x by 2 is what? 4x, and 2 to cancel, it is cos x. Here it is cos 4x, and it is what? Cos x. Since there is a multiplication, नीचे भी ऊपर मल्टीप्ली, all are factorized, दोनों बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो कैंसिल हो सकता है. sin 4x by cos 4x is equal to what? tan 4x, and finally it is what? Right hand side. Hence prove. Okay, easy question. There is no any difficulty. Just directly use the formula and you solve the question. Okay. Moving ahead, little bit typical question. थोड़ा सा difficult एक question करें, such that your idea will be developed. Okay.
prove that cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x sin 3x plus sin 2x equal to what? Cot 3x. This is the question. Okay, so similar way we will do, what we will do, we will take left hand side. This is your left hand side. Okay, left hand side is equal to this. You are going to prove that result is what? Cot 3x. Cot 3x means what? You have to reach what? Cos 3x by sin 3x. So इस प्रॉब्लम में से थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करेंगे. देयर आर 3 टर्म्स गिवन. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3. देयर आर 3 टर्म्स इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. यू सी 4x और ट्वाइस एक्स अगर ऐड करें एंड डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या होगा? यू विल गेट 3x. इफ़ यू ऐड 4x प्लस 2x you are getting what? 3x. And if you add 4x plus 3x you are getting 7x and 7x by 2 equal to what? 7x by 2. तो आपका ये ऐसा कुछ एंगल नहीं है. तो इसीलिए फर्स्ट वी अरेंज cos 4x with cos 2x. Why I am arranging? क्यों अरेंज किया है? Because 4x plus 2x divided by 2 equal to what? 3x. ये मिल रहा है इसीलिए plus cos 3x. sin 4x सिमिलरली sin 4x के साथ sin 2x ट्वाइस x अरेंज करें, अरेंज इट प्लस sin 3x. नाउ हियर cos c प्लस cos d. cos c प्लस cos d फॉर्मूला क्या था? 2cc. क्या फॉर्मूला है? 2cc. दोनों cos होगा 2 cos c plus d means what? 4x plus 2x 6x by 2 into cos 4x minus 2x means twice x by 2 plus cos 3x. Okay, I hope you are understanding. Similarly sin c plus sin d means what? 2sc. Formula is what? 2sc. First sin then cos. Sin ये सेम आएगा c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइड बाई 2 सेम आएगा रिजल्ट प्लस sin 3x. ओके, डोंट कैंसल हियर. आप लोग शायद इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स है ये भी कैंसिल करेगा, ये भी कैंसिल कर देगा. यू सी दिस इज ए टर्म वेयर एडिशन इज देयर. अगर सब मल्टीप्लाई होता तो आप कर सकते हैं. तो डोंट डू दिस. Another more step, it will be 2 cos 3x into 2 cancel हो गया, क्या होगा? cos x and it is cos 3x. Okay, similarly here 2 sin 3x cos x plus sin 3x. So these are the simple calculation I have done. You understand? Now here you see here cos 3x is there, here cos 3x is there. So you can take cos 3x common. Similarly in sin 3x is there, sin 3x there. You can take common. Okay. From this step you can write which is equal to take common what? Cos 3x. Cos 3x common ले ले तो क्या होगा? इसमें क्या रह जाएगी? 2 into cos x. And here already you take cos 3x common, it will remain what? 1. Similarly in denominator में क्या होगा? sin 3x. sin 3x कॉमन लिया गया है. sin 3x I have taken common. Then first term में क्या रहेगा? 2 into cos x. And in this term 1. Understood? So this term and this term can be cancelled between them. What multiplication is there? So finally cos 3x by sin 3x is equal to what? Which equal to what? Right hand side. So these are the simple
application of the formula to solve such type of question. Okay, I hope you understand. Clear? So why I am arranging this? This is important. First step important है. सो इस स्टेप में क्यों अरेंज किया? बिकॉज ये दोनों ऐड करने के बाद डिवाइड करो तो आपका 3x एंगल मिलता है, इसीलिए आई हैव अरेंज इट. अदरवाइज आई कैन अरेंज 3x के साथ 2x भी कर सकता हूँ, लेकिन करने के अगर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो आप मैथ्स में क्या है, व्हेन एवर यू आर डूइंग एनी अरेंजमेंट, एनी इनोवेशन, योर एम इज़ टू मेक द प्रॉब्लम मोर ईजियर टू सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को ईजी हो जाए. इस उम्मीद के साथ आप अरेंजमेंट करेंगे, कोई भी इनोवेशन करेंगे. ठीक है, डू नॉट मेक द प्रॉब्लम क्रिटिकल, ऑलवेज मेक every step to be easy. So another question, suppose you are going to prove that cos x, this cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into what? Cot x equal to what? 1. This is the question you are going to prove it. You see x plus 2x is equal to what? 3x. So इसमें x है, twice x angle is there and 3x angle is there. So वहाँ में रिलेशन क्या है? x plus twice x is equal to what? 3x. Okay. So क्या रिलेशन है? x plus twice x is equal to what? 3x. And everything cot is there, so we are going to start to prove the formula, use the formula cot a plus b. हम स्टार्ट करेंगे कैसे? cot 3x equal to cot twice x plus x. Can I write this? So cot 3x से शुरू किया, cot 3x can be thrice x can be written as what? Twice x plus x. Now use the formula. This is your a and this is your b. Cot a plus b. What is the formula? फॉर्मूला था क्या? cot, फॉर्मूला एक बार साइड में लिख के रखिए. cot a plus b इक्वल टू व्हाट? cot a cot b minus 1 divided by cot a plus cot b. This is the formula. Okay. So a means what? A means what? Twice x. Cot twice x plus, not plus, cot twice x into cot x means what? Cot a into cot b. Okay, minus 1 divided by cot a. A means what? Twice x. B means what? X. So finally cot 3x is equal to this one. Okay, this is your cot 3x. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा. cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1. ओके, नाउ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट रिमूव करो, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x into cot x equal to cot 2x into cot x minus 1. Okay, what you are going to prove that? You are going to prove that right hand side is equal to what? 1. तो आप ये जो -1 है, this -1 को अगर पिकअप करें लेफ्ट हैंड साइड में, एंड इफ ऑल द टर्म, ये सारी टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए. इफ़ यू पिकअप दिस पर्टिकुलर, ये टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए, ये टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या करे? -1 पिकअप करे. व्हाट यू विल गेट? यू सी 1 इक्वल टू ये -1 को क्या क्या मैंने इधर ले आ गया, एंड दिस टर्म पिकअप इन द राइट हैंड साइड एंड दिस टर्म पिकअप इन द राइट हैंड साइड. ओके, तो पिकअप करे क्या होगा? ये प्लस से माइनस होगा, ये प्लस से माइनस होगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मच. cot x into cot 2x minus cot 3x
into cot 2x, okay, minus cot 3x into cot x, okay. I hope you understand. -1 को राइट लेफ्ट हैंड साइड में पिकअप किया है और दिस 2 टर्म्स को मैंने राइट हैंड साइड में पिकअप किया है, ओके. एंड फाइनली यू अरेंज इट, so you can write cot x into cot 2x, cot 3x into cot 2x minus cot 3x into cot 2x cot x equal to 1, because this result equal to what? 1. Henceforth, so this question can be solved by see the technique of the solving the problem. Start with 3x. 3x can be written as what? Twice x plus x, and दोनों साइड में cot लगाया, and then what happen? Use the formula cot a plus b, and finally you get the desired answer, okay. जो हमें प्रूफ करना है वो हो गया. Hope you understand. So this is the way you can apply the formula to solve the questions. So it is not possible for me solve every questions. I have solved few questions, and today I'll give you some homework to you. Let us you try it, and if you do it, then by the help of you I can cover up the syllabus very soon or very fast, okay. जल्दी हम ख़त्म कर सकते हैं, तो your cooperation is very very important. So I am giving you some homework to you, and let us you write all the homework and try to solve, and give me that feedback in the comment box that yes sir I have done it, मैंने कर लिया है. तो ये आप लोगों को देना है, फीडबैक देना है, ठीक है. Prove that cot 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to cot x into sin 5x minus ठीक है. What we will do in this particular question, I am giving you hints. You take first left hand side and find the result, and then take right hand side and find the result, and finally you can say that left hand side is equal to right hand side, okay. So here you can use sin c plus sin d, and here you can use sin c minus sin d, and cot x will cot will remain same. After expressing this you express cot 4x. cot 4x क्या होगा? sin cos 4x by sin 4x, and right hand side में क्या होगा? cos x by sin x, and then you see some term will be cancelled, and you will get a particular term in the left hand side and a particular term in the right hand side, and both will be equal. Left hand side is equal to what? Right hand side. This is the hints of the problem. Question: prove that cos 4x equal to 1 minus 8 sin square x into cos square x. Okay, 8 sin square x into what? Cos square x. Next question: prove that
sin 3x plus sin 2x minus sin x equal to 4 sin x into cos x by 2 into cos 3x by 2. Okay, solve this particular question. Here some arrangement is required. You see 3x plus x, ये दोनों अगर ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाई 2, 3x प्लस x क्या है 4x by 2 इक्वल टू ट्वाइस x मिल रहा है. सो व्हेन यू टेक लेफ्ट हैंड साइड व्हाट यू विल डू, यू विल अरेंज दिस टर्म विद दिस टर्म एंड उसको आइसोलेट करेंगे, एक्स्ट्रा रखेंगे. ऐसा लिख लेंगे, यू स्टार्ट लाइक दैट, sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x. सो योर स्टेप शुड बी स्टार्ट लाइक दैट. दिस sin c माइनस sin d, ये sin c माइनस sin d फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में क्या होता है 2 cos sin, c से शुरू होता है, cos से शुरू होता है, sin से ख़त्म होती है. एंड अरेंज दिस, और sin 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला यूज़ करें. देन यू सी अरेंज इट, यू विल गेट द रिजल्ट. आप कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू एज एन होमवर्क, and please try and solve these particular questions. I have a confidence that you can solve it very easily, and if you feel any doubt, any problems, you can discuss with me. But first you try 2, 3, 4 times. Your effort should be there. So giving your effort, if you do not solve the problem, then definitely I will help you. Okay, give me and send me the information into comment box. Yes sir, I could not solve the particular problem, so I'll discuss it in the next class. Okay, so I hope you understand my class. If you understand my class, definitely I have a confidence that you will share my videos to all other students, all other friends, so that everybody can be benefited in this pandemic situation. Okay, and those who still not subscribe my channel, my honest request is that subscribe my channel so that whenever I upload a video at any time, you can get that notification and you can watch the video and improve your skill in the subject mathematics. Okay, that is my sole objective, that every student should be very good in mathematics, and when you're good in mathematics, definitely you are going to be good in physics. Your confidence will be boosted up, and you will do wonders in coming days. With my best wishes to all of you, thank you very much and have a good day ahead.